let's start to solve this, because that day some of students said na ki one day we have calculate the cash flow again, so we start one and then we'll start next session. Okay, so let's try to start this problem. This is the fifth problem. Okay, some balance sheets are here, and here given some kind of instructions. The profit for 2006-07 was 8,600 and depreciation rupees 3,050 and increase in provision for doubtful debt 200. Income tax rupees 18,000 was paid during the year, charged against the provision, and in addition rupees 20,000 was charged against profit and carried to provision. An interim dividend of rupees 5,000 was paid in January, and additional plan was purchased in September 2006 for rupees 5,000, and investment cost rupees 5,000 were sold 2007 for rupees 4,800 and on. So just, and 1st March 2007 another investment was made of for rupees 6,250. So let's start and prepare your cash flow. Just we need to prepare adjusted profit and loss account, okay, and provision for tax. Okay, so let's start this problem. If you have any query, then we'll help you. Okay, so make cash flow statement and 2 more accounts, adjusted profit and loss and tax provision account. Let's start. Yes. Keep practice. If you don't do it, so how you solve, na? Let's prepare first which account? Adjusted profit and loss account and provision for tax account. Okay, come to the balance sheet and check your heads like that. Share capital is there, general reserve is there, creditors and tax provision. So tax provision is 19,000 and 21,000. Come to the accounts of ledgers of tax provision. Account, and you just mention
19,000 opening balance is credit side and credit balance is debit side. So here we have seen tax provision, it's a debit balance. 19,000 means opening balance, which we are showing in credit side of tax provision account, and credit balance is 21,000, which we are showing in debit side of tax provision of tax account. Okay, do it fast. Next, we have prepared adjusted profit and loss account. Okay, so what we do here, yes, next it is provision for doubtful debt. It is 1,000 and 1,200. Okay, so here it's a doubtful debt which we are taken in profit and loss account. No, here is not mentioning because of it's a debt, it's a bad debt, na, right? Yeah, it's not coming here. Now come to the balance sheet. Here we have seen building, plant and machinery, goodwill, investment, stock, debtors, and cash. Okay. And after that come to instructions. Profit for 2006-07 was 8,600. Against this had been charged depreciation rupees 3,050. So where we mention here, first entry we have mentioned in cash flow account. Okay. Next. Okay. Cash flow account we have mentioned 3,050 depreciation. Okay. Next. Provision for doubtful debt 200. Here we have mentioned provision for doubtful debt. Next, income tax rupees 18,000 was paid during the year, charged against the provision, and in addition rupees 20,000 was charged against the profit and carried to the provision. Okay, so where we mention income tax 18,000 and additional provision rupees 20,000, which we have taken. So provision for tax. Okay, come to the adjusted profit and loss account and mention here provision for tax rupees 20,000. Okay, and second effect, yeah, adjust provision accounts is 20,000. Okay, provision P&L provision account is 20,000. Anything else we'll check. Then an interim dividend of rupees 5,000 was paid in January 2007. So interim dividend also comes in P&L adjusted account. You have mentioned here 5,000, and second effect, payment of interim dividend. It's a financing activity, so it's mentioned in cash flow in finance activities. Interim dividend. Next. Additional plan was purchased in September of rupees
5,000. So additional plan was purchased means what? Some kind of machinery, right? Purchase. So where we mention investment, additional plan, right? How much it is? It purchased in 5,000. So here we have mentioned investment activities plan purchased in 5,000. Okay. Next. Investment cost rupees 5,000 were sold 2017 4,800. Okay, means 200 का यहाँ पे loss दिख रहा है. And on 1st March 2007, another investment was made for rupees 6,250. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes. So make it fast. Keep practice. Now next, you just mention investment here and loss on sale of investment because it's cost rupees 5,000 and sale in 4,800 means 200, it's a loss. And 1st March 2007, another investment was made for rupees 6,250. So you just mention investment, another in 6,250, loss on investment in 200, which you have to mention in P&L account. Okay. So now you have to close your provision tax account first. Calculate and डिफरेंस निकालिए. इसका कितना आता है? प्रोविजन टैक्स अकाउंट क्लोज करने के बाद 18,000 आता है क्या? यस. यस्टरडे आपका जो मीटिंग हुआ था ना रिगार्डिंग SIP, so today or sorry tomorrow or day after tomorrow you have to come with your rough notes or whatever the sir said, right? And you just sure that because those who are completed Ankur, Omkar and Chaitanya, okay, those Jayashri, those who are completed, please come with your synopsis, with your printout. Take signatures of director. If they suggest some kind of corrections, you just make it and take final printout if he approved. Okay, after correction. Okay, ma'am. Who's calling? Yes. Jayashree. Yes, Jayashri. Yes, done. 18,000 is coming or not? Yes, ma'am. Yeah. So this 18,000 difference you need to shift in cash flow account where it is income tax, the name of income tax, and you have to mention in operating activities. Right? Now you close second account and that is tax adjusted profit and loss account. So here we have seen like that key. Come on fast. Make totals and the difference is the profit is 28,800, which you have to mention in operating activities in 28,800 net profit before tax.
Then close the account. Okay. Then come to the cash flow. Okay. Now some items are pending in balance sheets. Okay. So come to the balance sheet and transfer the balances in their separate accounts. Like building, it's come 46,800 and 2007 it's a 45,000. Here we mention in or not, just check where we have mentioned in investment. No effect are here. Now because no adjustment is there, so whatever the adjustments given in the problem, on that basis we think about it and we just mention and put the item on that particular head. Plant and machinery is there 32,000, 38,280 and 40,000, 42,030. Goodwill is not even. Investment is effective. It is 10,000 and 11,250. So let me check here is mentioned or not. Investment. No, here we have just purchase because no adjustment is there. Okay. Now next stock is here 30,000 and 28,000. So regarding the stock here mention like that ki where it is. Profit had been doubtful interim. Dividend was here. Additional plan was purchased in 2000 and here are mentioned were sold. No is there. Okay, no issue. Next, एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिया है इन्होंने डेप्रिसिएशन जो हमने ऑलरेडी दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हमने लिया, डेप्रिसिएशन इन सॉरी स्टॉक एंड क्रेडिटर्स इन डेटर्स. अभी यहाँ पे क्यों लिया है ये? बिकॉज ऑफ सम प्रोविजंस आर हियर आर मेंशन. वी हैव जस्ट मेंशन सिंगल इफेक्ट ऑन दैट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. ओके, सो डाउटफुल डेट. अब डेप्ट किस किस पे कैलकुलेट होता है? डेटर्स पे एंड बैड डेप्ट्स पे. तो डेटर्स कितना था हमारा बैलेंस शीट में? यहाँ पे कितना दिया है डेटर्स? 22,070 एंड 20,300. ओके, सो हियर उन्होंने क्या किया? डेटर्स का कैलकुलेशंस किया. कितना आया? 230. हाउ इट इज कम्स? तो डेटर्स यहाँ पे है 20, इसका माइनस करो 22,300 में से जो भी डिफरेंस आएगा वो हमको आपको यहाँ पे दिखाना है. ठीक है, 230 कैलकुलेट करो, आता है उतना 22,300 माइनस 22,070. नेक्स्ट, इनकम टैक्स हमने कर दिया. क्रेडिटर्स पे क्या दिया है इन्होंने? हाउ मच इट इज क्रेडिटर्स? 9,750 2006 में था और 2007 में 6,380. कैलकुलेट करो हाउ मच इट इज एंड वॉट एवर द डिफरेंस कम्स यू जस्ट मेंशन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिकॉज इट्स अ daily purchase sale and purchase activities. Therefore then stocks comes in operating activity. Therefore here we mention stock. Here stock is mentioned in balance sheet 30,000 and 2007 is 28,000. So just calculate it and mention the difference of this and now make totals of all operating activities.
Yes, completed or not? Come on fast. Yes, ma'am. Done, everyone? Yes, ma'am. Yeah. Next, कैश फ्लो का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टोटल हो गया. क्लोजिंग बैलेंस कैश का चेक करो कितना आता है. 9,000 here are mentioned. What is the figure of mention? What is the figure mentioned in balance sheet? Let's check. Yes. Yes, it's a 9,000 cash. Means if this is match means your cash flow is correct. Yes, done or not? आ गया सबका? 10,000? Yes, ma'am. Yes. Okay. 6 प्रॉब्लम स्टार्ट करिए. चलिए इसे आप ही सॉल्व करिए फटाफट. बनाइए. बैलेंस शीट आर गिवन. Additional information is there. Net profit 27,050, depreciation charge 10,000, cash dividend declared during the period 12,000, and additional to the building was made during the year at cost rupees 78,000, and fully depreciated equipment costing rupees 30,000 was discarded as no salvage being realized, and prepare a cash flow account. सो बताइए कौन से अकाउंट बनेंगे इसमें. कम ऑन कि अभी आइडिया आ गया होगा आपको. यस. ओके. हाँ, वन थिंग इज देयर कि यू जस्ट मेक योर पीपीटी. ओके, एसआईपी की पीपीटी बनाइए और प्रेजेंट करिए फटाफट. बिकॉज यू नीड यू हैव टू सॉरी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द वैल्यूअर. ठीक है. जिनका एसआईपी कंप्लीट हो चुका है वो जस्ट मेक योर पीपीटी एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी. मैं आपको बताऊंगी कब प्रेजेंटेशन होंगे. नेक्स्ट वीक में ही रखते हैं. ओके. उसमें जैसे ही आप जो भी आपने Ma'am. यस यस सब आपका टाइटल रहेगा उसमें. कॉलेज का नाम, आपके मेंटर का, आपके गाइड का नाम, एंड देन उसमें आपका क्या क्या आपने लिया है, व्हाई यू चूज दिस टाइटल, लिटरेचर रिव्यू कहाँ से आया, इंट्रोडक्शन में क्या दिया, व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उसमें आपने क्या क्या लिया है. एवरी एटलीस्ट 10 to 15 स्लाइड्स मीन्स ओवरऑल योर प्रोजेक्ट यू जस्ट elaborate in 15 slides. Okay, what is the why you interpret there, how much how many years data you have to calculate it, how you calculated, and then what your suggestions, what your conclusions. Okay, some questions asked, the value is there. कब कर रहे हो presentations? नहीं करना है, फेल होना है. Presentation is most important. Okay, if you don't present, that means your degree is not valued. नो आंसर. नहीं करना है. अंकुर, जयश्री,
हाँ, ओके ओमकार, आर यू रेडी टू प्रेजेंट योर पीपीटी? चैतन्य, मैम नेक्स्ट वीक में ट्राई करेंगे बनाने के लिए पूरा। ट्राई नहीं, ट्राई करना है क्या बनाने के लिए? 5 मिनट में बन जाती पीपीटी, आपका प्रोजेक्ट रेडी है तो उसमें क्या ट्राई करना है? हाँ, एक दिन लगता ज्यादा से ज्यादा। ये हफ्ते में आप बनाइए, मैं मंडे मंडे आप दो दो लोग प्रेजेंट करिए। आई एम जस्ट बूस्टिंग यू गाइज, डू योर सेफ, यू आर अ फाइनेंस स्टूडेंट एंड नाउ यू आर इन थर्ड सेफ, सो ऑल दीज यू नीड टू प्रिपेयर वेरी वेल। अपने यहाँ कॉन्फ्रेंस होने वाला है, वहां पे भी आपको पेपर प्रेजेंट करने हैं रिगार्डिंग योर टॉपिक। आई विल सपोर्ट यू, नो इशू, बट यू जस्ट show me your interest. Okay, it's really help you when you become a manager. Now presentation skills is most important. Got it? जैसे आपने मुझे प्रोजेक्ट भेजे हैं वैसे ही अपने अपने पीपीटीज भेजिए, अगर कहीं कुछ है तो मैं आपको करेक्ट करके दूंगी, बट बी रेडी, क्योंकि यही पीपीटी आपकी प्रिपेयर रहेंगे तो जब आपका एग्जाम होगा तो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं, आप तो वेल प्रिपेयर रहोगे ना वाइवा के लिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइज। ओके ओके मैम। सॉल्व हो गया है प्रॉब्लम? चलो फटाफट करो, डोंट वेस्ट टाइम, 5 to 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम 15 मिनट्स। यस, डन। बाकी कॉलेजेस में वाइवास प्रेजेंटेशन चालू हो गए हैं, अपने कॉलेज में नहीं हुआ है बिकॉज यू आर टू मच लेट सबमिशंस। वाइवा की डेट कभी भी आ सकती है। चलो हो गया सॉल्व। पहले एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए फटाफट। फिक्स असेट अकाउंट बनाना पड़ेगा बिकॉज here mention some kind of additional information regarding fixed assets because of depreciation is there. Come on. And then cash flow बनाइए। फटाफट फटाफट करिए, बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है एंड इट्स रियली इजी। हो गया क्या 6 प्रॉब्लम? यस और नो? यस और नो बोलिए ना। Yes, ma'am. हाँ, ओके, प्रिपेयर करो जल्दी जल्दी। यस, डन। सब आइटम्स के बारे में तो आपको पता चल गया है, कहाँ कहाँ शिफ्ट करना है। कम ऑन। यस जयश्री, व्हाट हैपेंड? डन।
हुआ क्या? फिक्स असेट्स अकाउंट्स बनाइए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करिए फटाफट। बहुत ही इजी है, फटाफट करिए। चलिए, हो गया? जयश्री, ओंकार, नेक्स्ट प्रॉब्लम को मूव करते हैं जल्दी। सॉरी, मेरा डिलीट हो गया ना आपका, जस्ट अ सेकेंड। हो गया क्या जयश्री? फटाफट बोलो, डोंट वेस्ट योर टाइम। हो गया मैम। ओके, कैश आ गई आपकी इतनी 28,800। हैव यू मैच? यस मैम। ओके, गुड, 28,100। नेक्स्ट प्रॉब्लम। From the following information, prepare cash flow statement. Now we solve this. Balance sheet is here. Okay. And only on that balance sheet we need to prepare cash flow. Some information is here. So liability, assets. Additional information is given like that. Net profit for the year 2012 after providing rupees 20,000 as a depreciation was rupees 60,000. Okay, net profit. हमारी प्रॉब्लम में दिया है कि नेट प्रॉफिट नो, हियर आर नॉट मेंशन इन नेट प्रॉफिट बट इन एडजस्टमेंट दे आर गिविंग 20,000 एंड डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने जो था 60,000, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट किया था। नाउ ड्यूरिंग द 2012 company declared equity dividend rupees 10% and paid rupees 15,000 as income tax. कितना है इनकम टैक्स में? 15,000. सो यहाँ पे हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दी है, ऑन दैट बेसिस वी नीड टू प्रिपेयर आर कैश फ्लो। डायरेक्ट कैश फ्लो बनाते हैं। चलो, इसका कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, रिगार्डिंग सारी एडजस्टमेंट शेयर कैपिटल और प्रॉफिट से रिलेटेड है, और बैलेंस शीट में क्लियर आइटम दिए हैं। चलिए बना के देखते हैं विदाउट क्रिएट अदर आइटम्स। कैश फ्लो बनता है क्या? जस्ट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 2012. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंक्रीज प्रॉफिट लीजिए, इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000. सो जस्ट मेंशन प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर मेंशन इन बैलेंस शीट। जनवरी में 50,000 था, दिसंबर में 90 था, तो 90 में से 50 गया, इट्स मेंशन हियर 40,000. एड प्रपोज डिविडेंड 10% ऑफ 2 lakh. सो प्रपोज डिविडेंड इज गिवन
10% on 2 lakhs. Share capital is opening balance is 2 lakh and closing is also 2 lakhs. So just calculate 2 lakhs on 10% because it's here, and 20,000. It comes 20,000. Then after adding the profit, net profit is come 60,000, right? Next, add depreciation. Depreciation कितना है? यहाँ पे दिया है कि net profit for the year 12 providing 20,000 as depreciation. Clearly mention here. So you just mention and add in net profit depreciation rupees 20,000. Okay. Next, provision for tax. It's in balance sheet mentioned opening balance 20,000, closing balance 25,000. So what we take here? 20,000 opening balance. Okay. Now just calculate it to all. 60,000 plus 20,000 plus 20,000 funds from operation, it comes 1 lakh. Now increase in creditors, increase in stock. It's a, ये जो हमने बनाया है ना, नो इसमें हमने ये नहीं लिया कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टमेंट. जस्ट सिंपल बेस पे सारी चीजें. अगर आपको कभी in examination, if you don't have time, that time you have mentioned, but clearly mention all items. Okay, plus minus provisions, everything you mention all. So definitely it's a systematic process. वो तो काफी systematic है ये भी. Now you just add in profit, increase in creditors. So here mention creditors 15,000 and 20,000. So 20,000 minus 15,000, it's increase or decrease? 5,000. Yes, 5,000 you have to mention here. Then stock 25,000 and 15,000. Okay, opening ज़्यादा था, so it decrease whatever. So you just mention 10,000. Then increase in debtors. Debtors, how much it is? 10,000 and 20,000. So 20,000 minus 10,000, also 10,000. 10,000. Yes. Outstanding expenses. It's mentioned outstanding expenses here. Yes, in debit side, liability side, 5,000 and 1,000. Come to the cash flow and just mention whatever the difference of. Yes. Now cash generated for operation 1,01,000. Cash. Okay, sorry, we have to calculate here ना. अभी इन सब का टोटल करिए, कितना आता है? 1,01,000 आता है क्या, प्लस माइनस जो भी है करके. Then paid tax. Yes, ma'am. Yes, good. Tax paid करिए 15,000. 15,000 tax paid करिए. यहाँ पे दिया है paid rupees 15,000 as income tax. कितना आता है? Now उसके बाद नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है, अभी यहाँ पे हमने पहले सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये किया. देन विल पुट ऑल आइटम्स इन दैट पर्टिकुलर हेड. सो जो भी आया है इसका आंसर 86,000 है ना. Yes, ma'am.
यस, तो ये क्या हुआ आपका नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो भी कैश कैलकुलेट हुआ है दैट इज नाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेस नॉन करंट असेट्स। अभी करंट असेट्स कितना है वो चेक कर लीजिए, आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2,35,000, 2,75,000 इन्वेस्टमेंट्स में। इंक्रीज है डिक्रीज है वो दिखाइए। नेट कैश अप्रूव्ड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करिए। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेमेंट ऑफ लोन दिया है, रिपेमेंट ऑफ डिविडेंड है, इन बैलेंस शीट में दिया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बैंक लोन दिया है, बैंक लोन and repayment of dividend 20,000 and 40,000, sorry 20,000 and 4,000 डिविडेंड में दिया है। unclaimed dividend is 4,000। और यहाँ पे जो हमने डिविडेंड कैलकुलेट किया था 2 लाख पे, है ना, शेयर्स पे 10% निकाला था, वो कितना आया था 20,000। तो एक्चुअल डिविडेंड था 20,000, 4,000 वो अनक्लेम, मतलब जो क्लेम ही नहीं किया था, उसको माइनस करके जो भी डिफरेंस आता है, मतलब 16,000 का क्लेम अभी भी पेंडिंग है, राइट, वो यहाँ पे मेंशन करिए। नेक्स्ट, जो भी डिफरेंस आ रहा है आपका नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना आता है, 26,000 आता है क्या, कैलकुलेट करिए। Yes, ma'am. यस, गुड। देन नेट कैश फ्लो ऑल का टोटल करिए, ए प्लस बी प्लस सी। आपके पीपीटी सेंड करिए तो मैं आपको बता सकूं क्या क्या क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट पूछ सकते हैं, तो आप उसी को प्रिपेयर करेंगे। सो बी प्रिपेयर, ओके। पहले मुझे पीपीटी भेजिए आपका प्रोजेक्ट का सबका, देन आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड द वैल्यूअर एंड डायरेक्टर सर। Okay, ma'am. So you prepare very well and you will get good score. 100 marks is there, okay? Yes, ma'am. Next, कैश टोटल करिए, टोटल क्लोजिंग बैलेंस एंड कैश यहाँ पे जो आया है कितना आया, 30,000। सो लेट मी चेक इन आवर बैलेंस शीट। कैश इज 8,000 and 10,000, but opening balance of cash and bank, okay, so we need to cash and bank, okay, so 10,000 plus 20,000 is 30,000, both are here, cash and bank balance, okay, here are mentioned different, cash balance is 8,000, 10,000, bank balance is 22,000 and 20,000, so you have to add both one, so your answer is correct, it's come 30,000, right? Yes, ma'am.
Now last problem. Just solved. So cash flow, we closed today's cash flow, and today we'll share your fund flow and cash flow notes. Next time we'll solving the problem of EVM and all some kind of notes. Okay, so we'll finish our first unit maybe this Saturday. Tomorrow we have no lectures, but this Saturday we have a lectures. So finished this. Okay, read this information. Problem number 8. See, fund flow and cash flow is most important. Budget is also important. But budget, you know, how many of you listen budget? निर्मला सीतारामन budget? Anyone? किसी ने सुना है लिंक पे या कुछ? नहीं, जरूरत नहीं है मैडम, बिल्कुल जरूरत नहीं है. Okay, let's start problem number 8. From the following balance sheet, prepare cash flow statement for the year ended 2012. Okay. Liabilities and assets are given. Last 2 years data are here. Opening and closing balance, share capital, creditors, loan from X, loan from bank, personal and bank. Both loans are here. Assets, cash, data, stock, machinery, land, building. During the year, machine costing rupees 10,000, which is accumulated depreciation rupees 3,000. So 3,000 was sold for rupees 5,000. Okay. Let's start. कैश फ्लो स्टेटमेंट सेम जैसे अभी हमने बनाया ना वैसे ही बनाते हैं, बट यहाँ पे हमको मशीनरी अकाउंट एक बनाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सम प्रोविजन इज देयर. सो लेट वी स्टार्ट. मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट. यस, फटाफट बनाइए. प्रिपेयर करिए फटाफट. सेम है वैसे ही बनाइए, मैं आपको बताते रहूंगी, बट जल्दी बनाइए, 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए. From the following balance sheet, prepare cash flow statement. Yes. Done. All items are mentioned in cash flow. All items लेना है, मतलब पहले में हमने जैसे किया था वैसे ही. Here are given some machineries account. Okay. So opening and closing balance mentioned in there, whatever the depreciation and loss on sale of machineries mention and solve the same. Here are given some capitals. So share capital, how much it is?
1,25,000 and 1,53,000. Okay, so closing balance we are taking 1,53,000. On that basis we have calculated profit, and then we'll start our cash flow. So then capital at the beginning of the year कितना है? ओपनिंग में, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करो. 1,53,000 माइनस 1,25,000. 1,53,000 minus 1,25,000, because we need to calculate profit, right ना? So profit for the year कितना आया? 28,000 without tax paid. Yes, ma'am. Yeah. Then loss on sale of machinery. हम दो एडजस्टमेंट करते हैं ना, एक P&L में करते हैं और एक बैलेंस शीट में करते हैं. तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हुआ? 2,000. मेंशन हियर, ऐड करो लॉस. प्रॉफिट होता तो माइनस करते. 2,000. ठीक है. डेप्रिसिएशन कितना था असेट उस पे? डेप्रिसिएशन इज मशीनरी पे, मशीनरी द कॉस्ट ऑफ रुपीज 80,000 and 55,000. You have to mention first machinery account, okay, then opening balance and closing balance. ठीक है, मेंशन करो 80,000. Done, ma'am. Yes. Loss on sale of machine, okay, कितना है? 2,000. Come to the adjustment. Read carefully. क्या दिया है कि during the machine costing 10,000 था, depreciation 3,000 था, unsold कितना हुआ? 5,000. तो 5 में से 3,000 गया, कितना रहता है? 2,000. So loss on sale of machinery in cash flow means we have mentioned 2,000, and second effect is machinery account 2,000. Okay. Now depreciation. Okay. डेप्रिसिएशन का क्या है कि पहले तो मशीनरी देखना होगा. यहाँ पे 80,000, 55,000 है. ओके. देन इन सबका टोटल करिए. कॉस्टिंग कितना था? 10,000. डेप्रिसिएशन कितना था? 3,000. और बेचा कितने में? 5,000. तो कितना आता है? 18,000, राइट? तो 18,000 वाज depreciation which we have mentioned in here. Depreciation cash flow, sorry, here we already mentioned depreciation, and machinery account credit side we mentioned depreciation 18,000, right? Now Yes, calculate. ma'am. Yes, balance calculate करिए quick. $55,000 it comes, and you just mention the second effect. ठीक है. नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर चेंजेस वर्किंग कैपिटल, इन सबका टोटल करिए. इंक्रीज क्रेडिटर्स. अब क्रेडिटर्स क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है. क्रेडिटर्स कितना है? 44,000 and 40,000. कितना है? 44,000 and 4,000. कितना आया डिफरेंस? 4,000, राइट? 4,000. यस. तो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो ऐड करिए. नेक्स्ट, डिक्रीज इन स्टॉक. डिक्रीज इन स्टॉक कितना है? 15,000. स्टॉक कितना है हमारा? देखिए 40,000 and 25,000. माइनस करिए. डिक्रीज इन स्टॉक हुआ है. 18,000. यस. नेक्स्ट, increase in debtors.
इंक्रीज इन डेटर्स। डेटर्स चेक करने हैं, कितने हमारे डेटर्स 30,000 ओपनिंग है, 50,000 क्लोजिंग है, राइट? 30,000 ओपनिंग, 50,000 क्लोजिंग, सो डिफरेंस इज 20,000. 20,000. यस, कैलकुलेट करिए सबका टोटल, हाउ मच इट इज। नेट कैश प्रोवाइडेड निकालिए, 47,000 आता है क्या देखिए। Yes, ma'am. नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी 5,000 मेंशन करिए। नेक्स्ट, परचेस ऑफ लैंड। परचेस ऑफ लैंड, लैंड कितना है? ओपनिंग में 35,000, क्लोजिंग में 50,000 मेंशन करिए। 15,000 डिक्रीज हुआ है। देन परचेस ऑफ बिल्डिंग 35,000 ओपनिंग है, 60,000 क्लोजिंग है ना? Yes. ऐड करिए यहाँ पे। अभी सेकंड निकालिए, इसका इफेक्ट कितना आता है? 35,000 आता है माइनस में। नेक्स्ट, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसका नाम दीजिए बी। बी हेडिंग में डालिए इसको। नाउ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्या आएगा इसमें? लोन फ्रॉम बैंक, हाउ मच इट इज? 40,000, 50,000 डिफरेंस निकालिए। लोन फ्रॉम एक्स 25,000, दोनों भी डिफरेंस निकाल के लिखिए, कैलकुलेशन करिए कितना आता है देखिए। आया? Yes, ma'am. अभी सबका टोटल करिए। यस, Done. डन। चलो कैलकुलेट करते हैं। वॉट एवर द कैश कम्स 7,000 आ गया आपका 7,000। बैंक दिया नहीं है यहाँ पे, इसलिए सिर्फ कैश दिया है, तो हमारा मैच हुआ ये, है ना? चलो ये लास्ट है, इसे भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। द फॉलोइंग समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अंबुजा कंपनी लिमिटेड। दो क्लास इसलिए लिया है क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट करना है, एंड इट्स अ वास्ट, बहुत है एएफएम। इसे बनाइए। क्या दिया है? अंबुजा सीमेंट का इंफॉर्मेशन, असेट्स दी है, कैश, डेटर, स्टॉक, फिक्स असेट्स एंड कॉस्ट। लाइबिलिटीज दी है, शेयर कैपिटल 6% डिबेंचर्स ड्यू टू December 15, रिटेन अर्निंग्स
creditors, income tax payable, and accumulated depreciation. All things is here. Income statements are given. Statement of retained earnings are given. On that basis, you need to prepare cash flow. Okay? Same वैसे ही बनाना है जैसे अभी हमने किया था activities. Cash from operating activities, cash from everything is given here. Okay? So it's so simple problem. Make it fast. बहुत ही इजी प्रॉब्लम है. यहाँ पे स्टेटमेंट रिटेन अर्निंग्स में आपको प्रॉफिट, डिविडेंड्स, एवरीथिंग मिल जाएगा. इनकम स्टेटमेंट में आपको सेल, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑल. ओके, एंड ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर. यस, लेट्स प्रिपेयर कैश फ्लो. बनाइए, चलो फटाफट कर लेते ये भी. फॉर्मेट बनाइए कैश फ्लो का. चलिए, cash flow from operating activities. So net profit are given in income statement. Opening 82,000, right? So here we mention net profit 82,000. Changes in working capital, decrease in debtors. So check the balance sheet, how much debtors is there? 31,000 closing and 25,000 opening. So the difference of debtors is 6,000 decrease. Then increase in creditors. Let me check creditors in balance sheet. Creditors are here. Opening 20,000, closing 12,500. It's less means increase. Mention increase in creditors 7,500. Depreciation is 10,000. So depreciation here is not mentioned. Depreciation where it is, accumulated depreciation. Yes, 37,000, 27,000. Opening में से closing minus करो, it's come 10,000, and you just mention here cash flow depreciation in 10,000. Calculate the total and just check your stock is increase or decrease. Okay, so all minus you get 8,500. Now cash provided by operating activities. Total इसका नाम दीजिए, whatever the total comes, 82,000 for 8,500, it comes 90,500, right? Then tax paid, how much it is? 27,500. ये देखिए इनकम स्टेटमेंट में द टैक्स का कैलकुलेशन दिया हुआ है 27,500, राइट? सो इट कम्स इन हियर. इनकम टैक्स पेएबल, सॉरी, यहाँ पे दिया है 27,500, सेम ही है, उसी का डिफरेंस वहां पे दिया है. सो यू जस्ट मेंशन हियर 27,500. नेट कैश कैलकुलेट करिए. सबका टोटल 90,500 minus 27,500 becomes 63,000. Yes. Then cash flow
from investing activities. Cash flow from investing activities. Purchase of fixed assets. How much it is? Fixed assets. Fixed asset at cost 1,20,000, 1,05,000. So difference निकालिए इसका. ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करिए 120 माइनस 105. 15,000 डिक्रीज. ऐड करिए. नेट कैश प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इट कम्स 15,000. Right? Now, cash flow from financing activities. Issue of shares 1,000. Redemption of debentures. Issue of shares 1,000 come shares. The difference operating issue of shares redemption of shares. Redemption of shares माइनस करिए रिडम्पशन को. ये जो शेयर्स कैपिटल है इसमें से 32,500 शेयर कैपिटल एंड 31,500. 32 में से 1,000 आ गया. रिडम्पशन ऑफ शेयर्स में कितना दिया है आपको शेयर? Redemptions of debentures, sorry, debentures है. Redemptions of debentures. How much it is? Interest on debentures 3,000. ये इनकम टेस्ट इनकम में दिया हुआ है, बट डिबेंचर 6% ड्यू ऑन ये तो 20,000. क्लोजिंग 20,000 था, ओपनिंग 50,000 है. ठीक है. सो मेंशन इन दिस. नाउ नेक्स्ट डिविडेंड पेड 35,000. Okay, dividend 35,000. Now calculate A, B, C टोटल निकालिए. 6,000 आता है क्या चेक करिए. Yes, ma'am. Good. क्लोजिंग कैश कितना आया आपका? 9,000. चेक करते हैं बराबर आता है कि आपका कैश बैलेंस शीट में. यस 9,000. ठीक है. 9,000 है 15,000 है. मे बी 15,000 होना चाहिए ना. यस ओपनिंग कैश बैलेंस इज 15,000 एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस इज 9,000. सो 15,000 इज हियर. 15,000 कैश आता है आपका. यस 15,000 here. Okay, so this is all the cash flow statements and problems we have solved. मैं आज कोशिश करती हूँ आपको फंड फ्लो और कैश फ्लो के ये सारे नोट्स सेंड करने की, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको. और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोथ. एंड फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट न्यू चैप्टर्स, न्यू यूनिट्स और न्यू प्रॉब्लम्स. ओके. किसी को कुछ पूछना है या कुछ है तो बता दीजिए. नो वन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? और पीपीटीज वगैरह सब बनाइए अपनी. मैम
यस। स्पाइरल बाइंडिंग नहीं चाहिए सर बोले। नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ आप सिंपल प्रोजेक्ट आपका बना के लाइए, कॉपीज निकाल के उसको, ताकि सर चेक कर सके उसमें कुछ करेक्शंस है तो सर आपको बताएंगे, ठीक है? ओके मैम, सिंपल पेज पे ना? हाँ, अगर आप स्पाइरल करके लाते हो तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चेक करवाना है तो इतने सारे पेजेस आप कैसे लाएंगे ना। यस मैम। स्टेपल अगर हो सकते है तो स्टेपल करके लाइए, या फिर पंच करके फाइल में रखिए सारे। एक फाइल लीजिए, उसमें सारे पेपर्स पेजेस को पंच करके, वो वैसे भी आप दिखा सकते हो, बिकॉज इट्स अ रफ प्रोजेक्ट ना, यू जस्ट सैटरडे तक आना है ना? हाँ सैटरडे। सैटरडे, सैटरडे। ओके। ठीक है। ओके मैम। Okay, so bye bye, take care. Next Saturday we'll our 2 hours class and we'll finish our first unit. Okay, थैंक यू मैम। bye bye, good day.